जय श्री मन्नारायण। किड्स, आज हम 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेन 2025 पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर थोड़ा बहुत लेंदी एंड डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट। कुछ डरने का बात नहीं। ऐसे सम 7 क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, रिमेनिंग ऑल आर मैनेजेबल। So we'll discuss the paper. You'll get the strategy like what to do. And आने वाला शिफ्ट है दो दो लाइक दोपहर का शिफ्ट, आज 28 इवनिंग का शिफ्ट है और बाकी 5 शिफ्ट बाकी है। तो यू नो टू बॉदर लाइक जितना भी पेपर टफ रहने दो, देर आर 20 क्वेश्चन विच आर इजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुपके तुम डरने का कोई बात नहीं है। जो भी प्रिपरेशन, द व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, द सेम कॉन्सेप्ट रिविजन एंड द फॉर्मुलास, दिस आर द मेथड व्हाट यू शुड अप्लाई। अगर टफ रहे तो 5 या 4 क्वेश्चन टफ रहेंगे। इजी है, इजी बोले तो 1 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हर पेपर में आपको रीचेबल हो जाएगा। एंड जैसा टफ रहेगा, कम मार्क्स आने पर भी बहुत बड़ा परसेंटाइल मिलेगा। सो यहाँ पे लाइक पेपर टफ मीन्स इट्स एडवांटेज। अगर तुम परफॉर्मेंस तुम्हारा मॉडरेट है तो भी यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर रैंक। सो हैव दिस स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द रिमेनिंग शिफ्ट, अभी 5 शिफ्ट बाकी है, नी नॉट टू गेट स्केट। सो व्हाट इज अ सिंपल मेथोलॉजी अब तक जो जे मीन्स का है? concept clarity and the recollection of the formulas. Okay, no, we'll discuss the paper. Okay, good evening, bacho. We are going to discuss the JEE Mains 2025. 28th January morning shift. Morning shift. मैं आपका श्रीधर सर। थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट। जितना भी सपोर्ट मिल रहा है दैट इज इनफ। ओके, विल प्रोसीड। Okay, what about the paper? So let me say like it's a difficult and lengthy, not tough. We should not say difficult and lengthy. बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आप बिना कैलकुलेशन करे you are unable to conclude. Okay, fine. So first we'll start with the paper. Logic gates. So ये तो topic about the semiconductor physics. The topic name is logic gates. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो पूछ रहा है लाइक वी आर टू कैलकुलेट द इसका आउटपुट पूछ रहे। सो विल प्रोसीड इन दिस वे। यहाँ पे हम ए वाला तो ए होगा, बी परपेंडिकुलर, ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस आर आइन गेट, देन ए तो ए एंड दिस इज बी, सो दिस विल बिकम ए बी। यहाँ पे हमें ए बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हमें ए बी है एंड ए तो नॉर गेट हुआ, ए वाला भी आइन गेट है। देन यहाँ पे आउटपुट वाई एक्सप्रेशंस लिख देंगे। वाई इज इक्वल टू, let me increase the thickness pin, y is equal to ab complement plus ab the whole complement. Since a to nor hai na, so it should be this one. So then de Morgan's theorem apply karenge, so this will become dot ab complement. So बाद में a हुआ a complement plus b double complement dot a complement plus b complement. इसका एक्सपेंशन ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। वन मोर एक्सप्रेशन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक इट्स सिंप्लीफिकेशन। We are expanding this one.
ये तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बाद में ए वाला बी, बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हुआ a complement, this will be 0. This will become a complement b complement, a complement b, this will be 0. यहां से हम a complement आउटसाइड ले लेंगे। a complement अगर आउटसाइड ले लिए तो b, b, b complement b। So b complement 0, this will be 1 हुआ। So ये तो a complement, a complement means okay, this is the gate which will satisfy। Very good question। लिटिल बिट आप वेरिएबल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ए तो नॉट गेट हुआ ना। अगर आप ए देंगे तो आउटपुट या कितना है, ए है। यहाँ पे तो ए बी है, यहाँ यहाँ पे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है। तो द वन विच इज सेटिस्फाइंग, जो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस इज सेटिस्फाइंग द दिस पर्टिकुलर गेट। द टॉपिक नेम इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स, लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Two capacitors C1, C2 are connected in parallel to a battery. Charge time graph is shown below for the two capacitors. The energy stored with them in steady state are U1 and U2 respectively. Which of the given statement is correct? तो फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर है, like if you see this the final charge, so the charge across capacitor is more, no, steady state charge। इसको हम क्या बोलते हैं, like steady state charge बोलते हैं। इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट चार्ज मिलेगा Q1, okay, Q1 is equal to Q naught 1, 1 minus e to power of minus t lambda। Q2 equal to Q naught 2, 1 minus e to power of minus t lambda। और यहाँ पे लगे चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज जो है, इट इज दे आर कनेक्टेड पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी। सर्किट यहाँ पे डाल देंगे। C1, C2 तो इसका स्टेडी स्टेट चार्ज हुआ Q naught 1 minus Q naught 1, Q naught 2 minus Q naught 2, जिसका इक्वेशन यहाँ पे दे रहा हूं मैं। Charge time graph is shown below the capacitor. So steady state charge depends on what? Like it depends on capacitance C1 and battery EMF of battery E, lambda 1 बोल दीजिए। Then C2 E 1 minus E2 lambda 2। यहाँ पे एक रजिस्टर भी assumption कर लेंगे। R not needed, not needed, not needed, because unnecessary। Why to bring the other ideas? तो यहाँ पे तो from the graph we have the information, this will be Q naught 2 and this will be Q naught 2, Q naught 1। So from the graph Q naught 1 greater than Q naught 2, so therefore C1 greater than C2। यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, C1 is E2 square, C2 E square by 2। अगर C1 greater than C2 बोल तो U1 greater than U2। दिस इज सर्क्यूट ना, दिस सर्क्यूट एक्चुअली अगर आपको दिए तो लिटिल बिट इट वुड हैव बीन इजियर, बट बिना ये सर्क्यूट यहाँ पे पूछ रहे हैं, सो लिटिल बिट आई थिंक थोड़ा बहुत लाइक एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। द लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम। आर
connected in parallel to a battery. Individually, they're not connected. Both are in parallel and they're connected to a cell. I think this sentence is very important. अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो देन व्हाट विल हैपन ए डायग्राम अगर ए डायग्राम आपके पास है तो देन ओके यू कैन राइट दिस इक्वेशंस ओके फाइन द लैंग्वेज मैटर्स जो भी यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं से रखे फाइनल आप एग्जाम तो इंग्लिश में लिखते हैं ना सो गिव प्रियोरिटी फॉर लर्निंग इन इंग्लिश आल्सो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन में और एक पूछ रहा है कि इन स्टडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम अगला क्वेश्चन ले लेंगे which of the following is okay this a wala to my chapter name I'll indicate so this is the RC circuit और capacitors बोल दीजिए and subtopic name is RC circuit now next question which of the following is correct reaction यहाँ पे तो this are based on the nuclear physics beta reactions alpha beta reaction is asking neutron will get converted into neutron will get converted into proton and electron will be released okay the charge is conserved and anti-neutrino will be released not neutrino this is ruled because this charge is not conserved what about this here why this I'm not taking charge is not conserved यहाँ पे क्या है like here also charge is not conserved what about this here charge is conserved but angular momentum is not conserved that's why we are not picking up this here in this equation charge is conserved and angular momentum is conserved that's why this is the correct option I think this based on the theoretical one ये जो भी पूछ रहे हो दिस अ प्योरली theoretical you can't डिस्कस theory in एग्जाम आपको ये तो पहले ही पता होगा पता रहना चाहिए like आप जब theory पढ़ते this is the basic idea like why anti neutrino should be there ये जो पार्टिकल रिलीज होता है दिस इज कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो एंड ए वाला तो न्यूट्रिनो okay fine so this based on nuclear physics beta reactions beta plus beta minus अगला वाला क्वेश्चन ले लेंगे in an experiment for the measurement of viscosity so make observation so something problem is based on the viscosity chapter so chapter name is viscosity based on the Stokes law then in an experiment for measurement of viscosity of given liquid with a ball having radius consider the following statement graph between terminal velocity v and r will be a parabola so now according to the Stokes law what is the terminal velocity 6 pi eta rv एंड जब भी वो लिक्विड में बॉल मूव हो रहा है वेट एम जी टर्मिनल वेलोसिटी बाकी ऊपर बायन फोर्स एंड ये वाला विस्कस फोर्स इतने सारे दीज आर ऑल एक्टिंग एंड सराउंडेड बाय ए जो एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड ये वाला तो दिस द लिक्विड विस्कस लिक्विड
So ये तो लीनियर हुआ ग्राफ 6 pi eta. Okay, F is equal to viscous force equal to 6 pi eta RV. Then is asking graph between terminal velocity V and R will be. This is Stokes law. बाद में terminal velocity expression लिख देता हूँ. This should be equal to 2 R square this one 2 R square 9 eta density of the ball sigma minus liquid into G. This is the density of the ball sigma ले लेता हूँ. Density of the liquid rho L. Terminal graph between terminal velocity and R will be a parabola. I think Vt is proportional to R square. Okay, वाला correct statement है. Terminal velocity of different diameter balls are constant for a given liquid. Terminal velocity of different diameter balls. Different diameter balls are a constant for a given liquid. No, it will be different for different diameters. Measuring the terminal velocity is dependent on the temperature. Its quotient of viscosity depends on the measurement of terminal velocity. It's the eta quotient of viscosity decreases with increase in temperature. Quotient of viscosity decreases with increase in temperature. So तब तो like a terminal velocities depends on that one. So we can pick up this statement. This is not correct. This experiment can be utilized to assess the density of a given liquid. या हम इसको डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये सब पता रहे तो. अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस ईटा जी सभी पता है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस so then density of the liquid also we can find out. So then even option D is correct. C is already we have seen. A is correct. The balls are dropped with some issue. The value of eta will change. No, eta depends upon liquid. No, quotient of viscosity depends upon this liquid, doesn't depends upon the initial velocity. So this is a wrong statement. We'll pick up this. ये वाला हमारा option. Okay, fine. So little bit you have to really यहाँ पे not that easy. जो direct formula है viscosity वहाँ पे like ये हाँ little bit in different way. अगला question ले लेंगे. The dimensions of modulus of elasticity by the torque. Modulus of elasticity by the torque. तो एक काम करेंगे लेके ईटा टॉर्क इक्वल टू मॉडुलस ऑफ elastically by torque. Then यहाँ पे लेके is asking the elastic लेके modulus of elasticity. So इसका यंग्स मॉडुलस इसका तो डायमेंशंस हुआ न्यूटन. यूनिट कितना यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर का यूनिट. So this will become m1 l1 acceleration. Okay, this one by area L square. So this will become m1 L minus 1 T minus 2. Torque का formula torque to Newton per meter. Newton meter. इसका dimensions होगा Newton means m1 L1 T minus 2 into L1. So this will be m1 L square T minus 2. So this Young's modulus by torque. इसका dimensions m1 L m1 L square T minus 2.
m0 l minus 3 t0. t ओके, a का वैल्यू कितना है? a का 0, b का -3, c का 0. By, it's like it, I think by is asking something. Young's modulus by torque. The dimensions of that is comparing here. थोड़ा लैंग्वेज में भी जब ओरिजिनल पेपर आएगा, so it would have been well defined. So we'll see like a see paper like a until a paper tough रहे तो see like have a strategy like आपको जितना होता है like a you have to focus more on the doing as many positive options. The question which is lengthy आपको वहां पे तो skip करके बाद में लास्ट में आपको उसको attempt करना है. जो easy question से पहले वो कर लो. This is a little bit a lengthy question. A bead of mass m slides without friction on the wall of a vertical circular hoop of radius r as shown. The bead moves under the combined action of gravity and massless spring K attached. यहाँ पे a spring है. Velocity of bead when the length of spring becomes r. So ये थोड़ा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड. तो डायरेक्टली like यहाँ पे we are projecting with velocity here. The bead moves under combined action of gravity and massless. So we are not giving any initial velocity, just उसको एक we are giving the release from rest and under action of the spring forces. मेरे को यहाँ पे रिंग चाहिए. Okay. Fine. यहाँ पे हमारा स्प्रिंग था पहले. द बीट जो बीट था वो यहाँ पे है. द डायग्राम okay, there's a ring. इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे. So when it becomes r, when length becomes equal to r, velocity of bead when the length of spring becomes equal to r. r बोले तो something यहाँ पे होगा. Okay, the bead. This length will become r root 2. So length only r पूछ रहे हैं. Okay. Then यहाँ पे थोड़ा करेक्शन से of natural length r. स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है? r. So therefore here we will यहाँ पे हम ये ले लेंगे. ये बाद में. So ये वाला भी r हुआ. This is r. So this angle will become 60 degrees. Then this angle is 60 degree. ये जो height find out करेंगे इसका h1. h1 will be, so if this is 60 degree, then 60 degree. Cos 60 degree equal to h1 by r. h1 equal to r cos 60 degree will be r by 2. Then it will descend further height h. This h will be r. Then natural length. So पहले elongation कितना है? So the spring force will act like this. The elongation is x1. Here the elongation is 0 in this position. So we'll write this as a and b. It is released from rest. Here the elongation in the spring will be 0. This will call O, this is C, this is B. Here is asking the speed. Fine. So now we got the H is equal to R. So directly the decrease in potential energy.
mgh plus h1 plus decrease in elastic potential kx1 square by 2. This everything should be equal to mv square by 2. mg, h is r, h1 is r by 2, k by 2. x1 elongation will be r square, because elongation natural length of spring is r. Initial total length, यहाँ पे total length कितना है? Like initially it was 2r, so the spring is stretched by r. Natural length of spring is r. And this I could not get this one. यहाँ पे डाल दे लिख देता हूँ, natural length of spring is r. And this is very important. Then initial elongation कितना हुआ? Then x1 will become equal to r, because यहाँ पे length a to c, what is a to o? Length is 2r, so length of the spring is only r, so this will become the elongation. So therefore we are writing x1 equal to r. Then m v square by 2, 3 mg r by 2 k r square by 2 m v square. Solving for v, we'll get the required answer. V will be 2 will get cancelled out, so 3 mg r plus k r square whole by m. This will become 3g r plus kr square by m. And this will be our option. Okay, so nice question. Huh? Like uh, work done. So directly, if you apply the conservation of mechanical energy, problem is very easy. Huh? So यहाँ पे what is the concept? जब ball, जब like a ring beat this beat, when it moves from A to B, the gravity will do work, and spring force also does work. Spring force also does work. So the decrease in gravitational potential energy plus elastic potential is equal to kinetic energy. यहाँ पे elastic potential 0, because natural length of spring is r. When the length of spring becomes r is asking. Little bit good question and tough question. ऐसे questions को आप थोड़ा like when you put it in the last part of the problem solving, no, you'll be on safer side. Find the effective resistance. So यहाँ पे there's a one wire और बाकी A वाला वायर है. So इसका पॉइंट्स हम C एंड D रख देंगे. A एंड D एंड C एंड B. यहाँ A to C एक रजिस्टर है, C to D यहाँ पे रजिस्टर है, D to B यहाँ पे रजिस्टर है. So R by 3, R by 3, R by 3. So what is the effective resistance? R by 3, R by 3, R by 3. 1 plus 1 plus 1. R dash or R naught रख देंगे equivalent. So this will become R by 9. Equivalent equipotential. So ये जो wires है they are at same potential. So A and C are at A and D are at same potential. C and B are at same potential. So based on that equipotential, we can solve this problem. Next question. A wire of resistor R is bent into an equilateral triangle. An identical wire is bent into a square. What is the ratio of the resistance between any two vertices of triangle to the any two adjacent vertices of the square into an equilateral triangle? इसका जो perimeter है will be same. यहाँ पे हम L1 ले लेंगे. Length, resistance per unit length will define it. This will be L by R or R by L. This will be constant. A वाला तो now square हो चुका है. So now this is the triangle and this is the square. तो पहले RAB कैलकुलेट करेंगे. So what is RAB? RAB means
The resistance, this will be R1, R1, R1. यहाँ पे resistor R2 and R2. What is R1 value? R1 का value कितना होगा? R1 का value will be L1 will be, okay, resistance R1. R1 will be lambda into L1. And one more assumption, यहाँ पे lambda मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Total resistance is R. बाद में let me write everything in order. Confuse हो जाते तुम. यहाँ पे क्या है कि लगे L is equal to 3L1. So L1 का वैल्यू कितना है? L by 3. Then R1 का वैल्यू कितना है? Lambda into L1. Lambda का वैल्यू कितना है? We assumed it R by L. Then L1 will be L by 3. R by 3. Then similarly स्क्वायर लूप का फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर लूप का पेरीमीटर कितना होगा? 4L2. So L2 का वैल्यू will be L by 4. R2 will be lambda into L2. Lambda into lambda will be L by lambda will be R by L, L by 4. यहाँ पे पहले सर्किट में आर ए बी कैलकुलेट करेंगे. आर ए बी, दिस आर ए बी शुड बी इक्वल टू R1 1 by आर ए बी. पैरेलल है ना वो तो. So 1 by R1 plus 1 by 2 R1. आर ए बी विल बी R1 2 R1 by 3. R1 का वैल्यू कितना? R by 3. ये वाला 2R. 1 by आर ए बी, इसका तो वैल्यू 1 by R2 plus 1 by 3 R2. So RAB equal to 3 R2 by 4. R2 का वैल्यू कितना है? R by 4. So 3R by 8, 16. Now we'll take the ratio. RAB by capital RAB. 2R all divided by 3R by 16. 32 by 3. Mm-hmm. 3R by 4. Some कहीं पे 3 मिस हुआ है. Like I'll check it once. यहाँ पे 2R by 9, ना? 9 I missed. So this will be 9. So this will become 27. Calculations. And और एक बात यहाँ पे like language matters. और उसका रेजिस्टेंस भी like what he has done R कैपिटल R. इसका लेंथ हम एज्यूम कर सकते हैं. वही वायर को हम एक बार ट्रायंगल बेंड करते हैं और उसी वायर को हम एक बार स्क्वायर बेंड करते हैं. तो जो लेंथ रहता है वो इट रिमेन सेम. द डायमेंशंस L1 L2 वो चेंज हो जाएगा. लिटिल बिट ट्रिकियर यहाँ पे. तो दैट L रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज वेरी आइडिया. उसी वायर को हम एक बार ट्रायंगुलर लूप बनाते हैं, उसी वायर को हम एक बार स्क्वायर लूप बनाते हैं. गॉट इट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. टू सॉलिड स्पीयर्स of radii are made up of same material. Find the ratio of moment of inertia. Okay, fine, ये तो मैनेजेबल है. सो यहाँ पे हम एक सॉलिड स्पीयर R2 इक्वल टू R1. एक छोटा वाला स्पीयर है. बाद में हमें एक बड़ा वाला स्पीयर है. Now what is needed now? Here it's telling this is R1, this R2, made up of same material. So their masses will be different. Then इसका moment of inertia about any diameter. The moment of inertia about any diameter is being asked. About any diameter.
अबाउट एनी डायमीटर ये ले लेंगे. Then this is the omega omega. Then what is the moment of inertia? I1 by I2. इसका moment of inertia I1 this I2 should be equal to 2 by 5 m1 r1 square by 2 by 5 m2 r2 square. 2 by 5 तो कैंसिल हो जाएगा. रो into 4 by 3 pi r1 cube. ये वाला तो r1 square है. Then rho into 4 by 3 mass of second sphere will be rho 2 r cube. This will be r2 square. r1 by r2 to the power of 5 हो जाएगा. Then r1 by r2 is 5, so this will become 1 by 2 to the power of 5, 1 by 32. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. यहाँ पे मास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके फाइन, मास के बारे में नहीं दिया है, सो द मास हैज टू बी कैलकुलेटेड, बल्कि नॉट r1 स्क्वायर बाय r2. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. In YDC for 10th range at 10 meter from center, then what is the distance of 10 from central maxima? This is the question. Y1 is equal to n lambda capital D by small d. 10th bright fringe, 10 lambda value 600 into 10 to the power of minus 9 into capital D by small bright fringe at 10 millimeter from central maxima. यहाँ पे हमें ओके वेल यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसका y का वैल्यू कितना है? 10 millimeter. 10th fringe lambda कितना है? वेवलेंथ 600 into 10 to the power of minus 9 capital D by small d. Then for दूसरा वेवलेंथ को वही ब्राइट फ्रिंज कितना डिस्टेंस में है? y2 ये पता नहीं हमें. सेम 10th y2 equal to n2 lambda 2 by small d. इसका तो 10 lambda 2 660 into 10 to the power of minus 9 capital D by small d. Dividing these two, y2 by y1. 10 into 660 into 10 to the power of minus 9. y2 हमें चाहिए, so this will be 10 get cancels, so this will become 66 by 60. y1 का वैल्यू कितना है? 10. 11 by 10. So this will be at a distance of 11 millimeter. This is a basic formula. Y equal to n lambda, the position of central maxima in YDAC experiment. यहाँ पे तो YDAC इस तरह का बेसिक डायग्राम आपको याद रहना चाहिए. बिना ये डायग्राम्स आप you can't do it. There's a central maxima, first maxima, second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ से हम काउंट करते हैं. सेंट्रल मैक्सिमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड व्हाट इज द कैपिटल डी? कैपिटल डी दिस वन. यहाँ पे हमें स्लिट्स मिलेंगे, S1 एंड S2. फाइन, दैट द बेसिक YDSC. यू शुड थोड़ा बहुत आपको YDSC theory अगर याद रहे तो इट्स वेरी इजी. once again मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक यू शुड बी वेरी गुड इन theory. एंड व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी तो ये हुआ. व्हाट इज यहाँ पे सर? लैम्डा. लैम्डा क्या है? सो दिस इज स्मॉल डी. लैम्डा तो इंसिडेंट वेवलेंथ. लैम्डा 1 बाद में लैम्डा 2 चेंज करेंगे. देन ए वाला तो y1 यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. फाइन. बहुत सारे मैक्सिमस रहेंगे. 11th 12 13 14 15.
एंड पैटर्न विल बी सिमेट्रिक, यहाँ पे नीचे भी वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा. 1 2 3 4 5 बेसिक तेरी अगर याद रहे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ए वाला तो इसको हम स्लिक बोलते हैं. एंड दिस इज द स्क्रीन. यहीं पे हमें वो पैटर्न दिखेगा. So the problem is based on the YDSC, wave optics. And YDSC. अगर तेरी conceptually आप थोड़ा strong रहे तो you can manage this paper very easily. Like a next question based on a proton of mass mp has same energy as that of photon of specific wavelength. If proton is moving at non, then the ratio of de Broglie wavelength of proton to that wavelength of the proton. A proton of same energy as that of energy of proton mass mp Vp square should be equal to energy of proton, energy of proton, Sc by lambda. Specific wavelength, wavelength of photon this much. Then de Broglie wavelength of a wala to then proton ka proton. Then de Broglie wavelength of the proton is moving with a velocity Vp. Iska mass is m equal to h by mp into Vp. यहाँ पे थोड़ा एनर्जी इक्वेशन चाहिए था. The energy of the proton, same energy E. This what we'll call E. Then de Broglie wavelength of the photon is lambda hp. Ratio of de Broglie wavelength of the proton to wavelength of the proton. Wavelength of proton lambda hp. Now यहाँ substitute करेंगे. De Broglie wavelength of the proton to the photon. This should be equal to h by momentum. Then this should be equal to Sc by E. H will cancel out. E by C by momentum of proton. Momentum of proton, momentum का इक्वेशन हम ऐसे एनर्जी में भी लिख सकते हैं. 2 times mass of proton into energy. So this will become 1 by C E by 2 times of mass of proton. This will be your answer. Okay, fine. Thoda like this energy E is should be given as same energy E as that of photon of specific wavelength. What is this formula? यहाँ पे सर like यहाँ पे क्या like replacing the momentum we can write also write in terms of energy. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Find the center of mass of rectangular plate of mass density. इसका डेंसिटी यहाँ पे दे रहा है like sigma equal to sigma naught x. तो यहाँ पे तो the density is varying only along x axis. Along y axis is uniform. So definitely y coordinate should be b by 2 only. So a options ruled out. So इसमें हम ले लेंगे. Now you can directly convert this into the rod, no? And linear mass density. Like okay, no problem. The plate only. So we'll assume the plate. यहाँ पे हम एक प्लेट है तो हम करेंगे. देन बाद में these are x and y axis. थोड़ा डायग्राम
या ऐसे ले लेंगे. So what are these? These are x and y axis. X a बोला y. Then we'll assume one strip. इसका पहले मास डिफाइन कर लेंगे, देन सेंटर ऑफ मास अपने आप डिफाइन हो जाएगी. इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस विल बी हियर ओनली, dx at a distance b by 2, let it be at a distance x. So what is the formula for center of mass? Xcm equal to integral of x into dm by integral of dm. dm तो सिग्मा, इसको हम एक काम करेंगे, विल कन्वर्ट दिस इनटू like a linear rod. It will be very easy. Sigma into the thickness of this area will be dx into b divided by this will be sigma into dx into b. x b तो कॉमन आ जाएगा, देन x सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा x नॉट बाय ए बी dx b. b यहां से भी कॉमन आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा x नॉट ए बी बाय इंटू dx. b तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे अंदर एक b भी कैंसिल हो जाएगा. सिग्मा नॉट ए न्यूमरेटर में, देन एक्स स्क्वायर डी एक्स, न्यूमरेटर में भी सिग्मा नॉट ए बी, सिग्मा नॉट ए बी बाहर आ जाएगा, देन एक्स डी एक्स. तो इसका था वैल्यू 0 to a 0 to a. Sigma naught a also will cancel out. Now up to, like this will become a cube by 3 a square by 2 2a by 3. This is the x coordinate. Y coordinate to ba. So already we have defined it. Y coordinate will be b by 2. The x coordinate is 2a by 3. So this will be our answer. Very good question. बिना calculation not possible. सॉल्व करना ही पड़ता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बेसिक डेफिनेशन है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये तो सेंटर ऑफ मास, टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम अलोंग एक्स अलोंग वाई कोऑर्डिनेट, आपको तो ये तो पता ही होगा. देन अगला वाला, ए थिन प्रिज्म P1 with angle 40 made up of glass having refractance 1.4 is combined with another thin prism P2 made up of glass of refractance 1.72 to get dispersion without deviation. So the net deviation should be 0. So यहाँ पे थोड़ा प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हमें दो प्रिज्म से ए दो प्रिज्म हुआ. इसका एंगल A1 A2, ए वाला μ1 μ2. To get dispersion without deviation, net deviation should be 0. So अगर आप डायग्राम उतना जरूरी नहीं है, so net deviation should be 0. The net deviation, this will be 0. So this will become μ1 minus A1. Deviation का दूसरा वाला तो नेगेटिव होगा. So that will be μ2 minus 1 A2. The angle of prism P2, μ1 minus 1 A1 by μ2 minus 1. μ1 का वैल्यू 1.54 by 1. Angle of prism 4 degrees. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 minus 1. 0.54 by 0.72 into 4 degrees. 54 by 72 into, ये तो 9 by 12 हुआ, 3 degrees total.
to get the dispersion without deviation. यहाँ पे रेस ये दोनों पैरेलल रहेंगे. चेक इट. नो डिविएशन. यहाँ पे डिस्पर्शन है. हम हमें क्या पूछ रहे हैं, like only they is asking the deviation should be zero, so the emergent ray this should become parallel to the incident ray. ये वाला तो incident ray है. Then ये दोनों parallel है तो then net deviation is zero. इसके लिए तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में डायग्राम डालने का भी जरूरत नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. द वेरिएशन ऑफ आर एस गैस मॉलिक्यूल विद द टेम्परेचर. आपको तो पता है लेकिन केटीजी वी आर एम एस इक्वल टू 3 RT by m naught. So VRMS square equal to 3 RT by m naught. So this will become y square equal to say some alpha x. Then the graph should be of like this. Parabola, like projectile motion. Very good question, simple. थोड़ा बहुत आपको मैथ्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा. फिजिक्स का तो कुछ आइडिया नहीं है. हेमिस्फेरिकल वेसल इज हेमिस्फेरिकल वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. यहाँ पे हमें लिक्विड, यहाँ पे हम एक डायग्राम डाल देंगे. ये वाला हेमिस्फेरिकल वेसल. तो आदमी यहाँ पे है. फाइन. ये बाकी सब ये जो है दिस इज द लिक्विड. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. बच्चों को यहाँ पे लगे फॉर्मूला पता रहे तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. देन यू कैन मैनेज. देन आदमी आदमी ए कॉइन इज केप्ट. वेयर द कॉइन? कॉइन यहाँ पे कॉइन. यहाँ पे हम कॉइन रख देंगे. दिस इज आवर कॉइन. द मिनिमम वैल्यू ऑफ सो दैट पर्सन, पर्सन पर्सन यहाँ पे खड़ा है. दिस वन लाइक पर्सन कौन देखता है? नो नो, अगेन अगेन इज द रेस शुड एंटर इज आई. नो, तो यहां से रे रिफ्रैक्ट होके डायरेक्टली और इस तरह सीधा इसका आंख में घुसना है. देन ओनली इज एबल टू सी इट. ओके फाइन. जब जब कब दिखता है कॉइन? जब ये रे जो रेस एमिटेड बाय द कॉइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सीधा सीधा इसके आंख में चले जाने पर देन दिस कॉइन विल बी विजिबल. ये जो पॉट है, सो दिस पॉट विल नॉट अलाउ. आप और एक बात लाइक सर लगे सीधा क्यों कॉइन नहीं दिखता है? सीधा क्यों कॉइन नहीं दिखता है? सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जो पॉट है और हेमिस्फेरिकल वेसल है, इट विल बी मेड अप ऑफ सम ओपेक. इट विल नॉट परमिट द रेस टू पास थ्रू इट. नो, ये तो वेसल वेसल बोले तो ओपेक. मेटल मेटल वेसल बोल दो बेटर. Then this is the liquid. Then it will undergo refraction. So this angle will be how much? 45 degrees.
90 degrees. Then this is air. Then we'll write down the formula. Mu angle of incidence sine 45 degrees is equal to 1 into sine 90. 1 by root 2 or mu equal to root 2. I think this problem is there in SEO. Instead of vessel, he made it as a swimming pool. अगर आपको थोड़ा SEO में आप पढ़े रहे तो then this problem is very easy. Or okay, even the same problem, it was like a swimming pool. इसको लेक बना दिया SEO में. This is simple. So like this is Snell's law. We are applying Snell's law here. There's the incident ray, there's a refracted ray, there's a boundary. इसको यहाँ पे हम boundary बोलते हैं. Then this will be the angle. This will be the normal. Almost the ray will become parallel to the normal. Minimum is asking no, so therefore we can assume sine 90 equal to 1. यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है, like a uniform wire of linear charge density. Then uniform wire of linear charge density lambda is placed along y-axis, the locus of equipotential surfaces. Wire is यहाँ पे वायर है, इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाएंगे. ये वाला यूनिफॉर्म वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक्चुअली यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है. Placed along y-axis, the locus of equipotential surface. So what is the field produced by the long wire? अगर आपको a long wire है तो the field will be radially outward. आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? सो दिस इज द लॉन्ग वायर क्रॉस सेक्शनल व्यू. अगर आप ऊपर से यहाँ से ऊपर से देखते हो देन दिस विल बी द फील्ड इस तरह हो जाएगा. एग्रीड. तो यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करेंगे. इक्विपोटेंशियल ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर सर्कल, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. And what are these arrows? This is the E bar and this is the equipotential surface. क्या होगा? ये तो सिलेंडर होगा. तो अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, इट विल बी लाइक दिस. ये जो सरफेस है, दिस विल बी योर सरफेस. इन एग्जाम यू नीड नॉट टू ड्रॉ डायग्राम. all this imagination थोड़ा या मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग ऑल द डायग्राम्स. ये जो क्या हुआ ना, दिस इज द सिलेंडर. तो यहाँ पे ई बार का ई बार विल बी लाइक दिस. ई बार विल बी रेडियली आउटवर्ड. हर जगह ई बार विल बी रेडियली आउटवर्ड. Then what is the condition for E bar and equipotential cylinder? So it should be perpendicular. No, ये तो y-axis. No, this will be x-axis. This will be z-axis. So ये जो surface है, no, you take this surface. This surface will lie in exact plane. ये तो circle हुआ ना, so this will be x square. इसका सरफेस डिफाइन करेंगे. ये तो सर्कल हुआ. ऐसे बहुत सारे सर्कल से आप यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? दिस विल बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इसका रेडियस आर आर कर लेंगे.
Then what is the radius of this circle? X square. Sorry, ये तो z चाहिए. Now what is the radius of circle? ये तो circle of radius r. Then in which plane it is lying? XZ plane. So therefore this will become root of that r square is constant. Oh, जितना भी हो सकता है value. That's the locus of equipotential. All the points will be at same potential. A, like a 1, 2, 3, 4, 5. All they will have same potential. So we'll pick up this option. हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. लाइक यू शुड हैव द इमेजिनेशन ऑफ द लाइन चार्ज. अगर आपको लाइन चार्ज पता है तो लाइक व्हाट इज इक्विपोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज? सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया फिनिश. एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओनली सम मैथमेटिक्स यू टू अप्लाई एंड यू टू पिक अप द इक्वेशन. कॉन्सेप्चुअली गुड. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो दिस पेपर वेरी इजी. बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन. EM wave is put in a cylinder. So यहाँ पे हमें एक सिलेंडर चाहिए. The diameter of cylinder is halved. इसको हम आधा करेंगे. Only diameter को. Then energy इसके then is asking about the energy. Then what is the energy density formula? Half epsilon naught ERMS square. ये तो energy density. What is the formula for energy density? Energy of EM wave equal to half epsilon naught E naught square. E naught का value. This is E naught. यहाँ पे अब मैं शेड कर लेता हूँ. Be easy. And volume of cylinder will be pi. Diameter of cylinder यहाँ पे diameter में पूछ रहा है. So d by 2 whole square into L. What is the diameter? Diameter is d. Now the diameter has become d by 2. Length is same. So new energy equation ले लेंगे. Half epsilon naught. इसका energy कितना होगा? Something E square pi. Diameter तो आधा आधा हो गया. No. Earlier 10 diameter, radius is 5. Now the diameter is made 5. The radius will become 2.5. The basic idea is like this. So this will become half epsilon naught E square pi d square by 8L A half epsilon naught E naught square pi d square 4L. U dash by U कर देंगे. Then this will be U dash का value E square by 8 and A वाला E naught square by 4. E square by 2 E naught square. The energy of EM wave remains same. So U dash equal to U. So therefore E square is equal to 2 E naught square. E equal to कितना हुआ? root 2 E naught. The new energy, find the new equation of EM wave. ERMS. ये तो ERMS. RMS value है. So ये RMS हुआ.
ये भी न्यू आरएमएस, जो भी है दिस इज इन आरएमएस। एक काम करेंगे, दिस विल बी ई नॉट, ई नॉट सेम वही सिंबल ले लेंगे। नो, इसका आरएमएस कितना होगा? अर्लियर ई नॉट वाज 100, 100 बाई रूट टू। आरएमएस वैल्यू 100 बाई रूट टू, इसका तो 100 हुआ। नो द इट्स इसका आरएमएस वैल्यू कितना है? लाइक ई नॉट इज 100। नो, दिस व्हाट हमें क्या मिला है? दिस द न्यू आरएमएस वैल्यू। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। सो ई डैश इक्वल टू, एक काम करेंगे, लाइक ये तो एफ्ला नॉट ई आरएमएस। थोड़ा थोड़ा लाइक फॉर्मूला भूल गया था मैं। ई आरएमएस again, this will be the new one will be again in ERMS only. Diameter इसका d by 2। नो, अगला वाला तो d by 4 होगा नो। so this will be diameter, नो इसका हाफ हुआ। रेडियस कितना है? नो विल बी r equal to d by 4। या फाइन। नो इसका सिंबल थोड़ा e स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? नो ई आर एम एस थोड़ा लाइक एफ नॉट ई आर एम एस स्क्वायर पाई डी स्क्वायर एल बाई 4। ओके फाइन। ये टू नहीं रहेगा यहाँ पे। देन ये दोनों डिवाइड करेंगे, सो देन दिस विल बिकम यू डैश। ये तो ई आर एम एस हो गया, ई आर एम एस स्क्वायर। थोड़ा सिंबल में गड़बड़ हो गया। देन 1/8 1/4, ये तो नो ई आर एम एस स्क्वायर एंड ई स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें तो यू डैश चाहिए ना, यू डैश इक्वल टू यू बोल रहे हैं। तो therefore this will become e square equal to 2 ई आर एम एस स्क्वायर। ई आर एम एस का वैल्यू कितना है? ई नॉट बाई रूट टू होल स्क्वायर। ये तो कितना हुआ? ई नॉट स्क्वायर ओनली। और कितना हुआ? तो ये तो ई नॉट का वैल्यू कितना है? 100। नो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हम जो फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज द ई आर एम एस। ये तो आर एम एस, इसका रूट टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई डैश इक्वल टू ई बाई रूट टू, 100 बाई रूट टू। 100 बाई रूट टू करीब करीब इट विल बी 100 will be 100 by root 2 0.770 होगा। so the nearest we can pick up the 50। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है मेरा। Hmm, या तो रेडियस रेडियस एक काम करेंगे, दिस रेडियस इज R1, R1 इज d by 2। इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा? d by 4। ओके, दैट इज ओके फाइन। इट्स नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे किस लिए दिस वन? हाफ एप्सिलॉन नॉट पाई, पाई वैल्यू d by 2 का ऑफ। थोड़ा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसका डायमीटर कितना है? ओके, नो नो, दिस विल बिकम 16।
तो 16 by u dash, ए वाला हो गया 9, 16 ए वाला हो गया 4, ई स्क्वायर इक्वल टू 4. सो बाद में 4, this will become only 2. Then this will become root 2 e naught square. E naught will be root 2 e naught square will be e square. ए भी कैंसल हो चुका है. E naught square 2 by root 2. एक एक काम करता हूँ LL वर्क. Okay, बच्चों, like I did about the based on EM waves. The question is, यहाँ पे दो सिलेंडर हैं यहाँ पे, like अगला वाला सिलेंडर का डायमीटर ऑफ कर देते हैं. तो दिस डायमीटर वाज d, इसका रेडियस कितना हुआ r1 d/2, इसका डायमीटर d/2. Then its radius is r2. What is r1? R1 will be d/2. What is r2? d/2 by 2 will become d/4. Then energy given by, the energy is given by epsilon naught ERMS square into volume of cylinder, pi r1 square into L. Length of the cylinder, let it be L. Then U dash equal to energy, यहाँ पे U dash. This should be equal to epsilon naught. New पता नहीं, वो value E we have to calculate. Pi r2 square L. So U dash, U equal to U dash बोल रहे हैं, same inside the cylinder. So then what we do is we'll equate given. So this will become ERMS square into R1 square equal to E square into R2 square. ERMS value, ERMS का value. Okay, this everything will become ERMS R1 equal to E into R2. हमें तो E का value find out करना है. So ERMS will be 100 by root 2. R1 value is d/2 by R2. R2 value will be d/4. So this will become 100 E का value, D cancel हो जाएगा, by 2 also will cancel out. This will become 100 by, this will be 2 into 100 by root 2. इसका ERMS चाहिए. This will be E by root 2. This is the maximum value. So at the maximum value, so this will become 200 by root 2. So ये तो ERMS value हुआ. तो इसका maximum value will be E naught something बोल देंगे. So this will be 200. So this will be your answer. Little bit trickier. So आपको ये formula याद रहना चाहिए. इसको E naught बोल देंगे. Next question. No, this is the, for a central force, work done is independent of path. Then because any central force, definitely it's a conservative force. ये तो true हुआ, correct है. The mechanical potential is not defined for every force because for friction, external forces are not defined. Only for conservative forces it is defined. Mechanism is defined.
potential. This is defined. यहाँ पे this is purely theoretical is defined only for gravity, elastic, electric, and magnetic forces. इसके अलावा हमें बहुत सारे फोर्सेस है. नॉर्मल कांटेक्ट, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये जो है like a tension. These are not like a potential here, which will not possess any potential energy. So I think even this also a correct statement. The mechanical moment is not defined for every force. Statement 1 and statement 2, and both are correct. And statement 1 is statement 2, and statement 2 is not correct explanation. So what we can select both are true. Both statements 1 and 2 are correct. We take the next question. Now यहाँ पे find the fractional change in area. यहाँ पे हमें एक लैमिना मिला है, इसके लिए हम एक screw gauge use कर रहे हैं. What is the least count of the screw gauge? The question is like this. Find the fractional area change in area. A screw gauge of pitch and number of divisions 50 is used in measuring the length and breadth. So what is the least count of the screw gauge? Will be pitch by number of divisions. Pitch इसका कितना है? 0.75 millimeter by number of divisions इसका 50 हुआ. So this will become 75 by 5 will be 15. 0.015 millimeter. And this particular screw gauge, we are using it. So then find the fractional change in area, delta A by E. This should be equal to delta L by L, delta B by B. Delta L, the same screw gauge is used. Then what is the error? We'll see. There's an error. There's a possible error. Then this will be delta L will be 5. Delta L will be 0.015 millimeter by, this will be 5 millimeter. Then 2.5, यहाँ पे भी 0.015 millimeter by 2.5 millimeter. तो 0.015 outside ले लेंगे. ये तो this will become 2.5. इसको 5 by 2 बना दो. Then 5 millimeter भी बाहर आ जाएगा. Then this will become 1 plus 2. This will become 3 into 0.015 by millimeter cancel हो जाएगा. This will be 5. 5 1 जा, 5 3 जा. 3 into 0.003 or 0.09. Then percentage error will become 0.9%. I got something data like this. Little bit एक question paper आने के बाद we'll verify it. Okay, अगला वाला question. It is based on the Carnot heat engine. Carnot engine works between source and source temperature, sinks temperature. What is the Carnot heat engine? ये तो वो like ideal gas. यहाँ पे हम heat supplied करते हैं. यहाँ पे heat reject हो जाता है. Q positive. यहाँ पे Q positive. Heat will be rejected and it will do mechanical work. Then this will be 1 minus temperature of sink. Temperature of sink TL रख देंगे symbol. इसका TH. This will be 1 by TL by TH. This is one basic formula. 1 minus 273 by 473.
ईटा 1 हुआ। ये तो प्योरली मैथ्स है। 271 माइनस 273/373, 1 माइनस 373/473, इसका वैल्यू 100/473, इसका वैल्यू 100/373, इसका वैल्यू 100 473 माइनस इसको 200 हो जाएगा ना ये। नाउ यहाँ पे वी हैव टू कंपेयर, वैल्यूज कंपेयर करना पड़ता है। तो 200/473, I'll take calculator, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है। I'll take calculator and we'll compare the values. 200 divided by 473, 0.42, 423. 100 by 373, 0.267. 100 by 473, 100 by 473, 0.211. तो यहाँ पे हम eta1 greater than eta2 greater than eta3. There's one question asked like this. Based on Carnot seat engine, not part of syllabus. Okay, fine. So next question ले लेंगे. I think I ended up. Okay, these are the questions I got it. One more question is there. I'll just now I got it. I'll upload it. Okay, bachcho, there's one more question. I just now I got it. A thread of length L is attached with a particle of mass m and charge q, and its end is released from a portion as shown in uniform electric field. यहाँ पे uniform electric field present है. Find the velocity when it becomes horizontal. When the thread becomes horizontal. Okay, why it will become horizontal? यहाँ पे तो gravity act हो जाएगा. So when it rotates, it will come like this. So what is the vertical displacement h? Is asking find the velocity. इसका speed कितना है? Then what are the forces acting here? Electrostatic force, Fe, and this is Fe. What is the charge? Charge यहाँ पे है. Okay, fine. ये वाला तो inch है. Then how much decrease in potential energy? mgh. Decrease in potential energy mgh plus work done by electrostatic force. Work done by electrostatic force. यहाँ पे earlier what was the position? L cos 30 degree. बाद में कितना है? At what distance it is L? So how much of displacement it has undergone? X. So we'll do one thing. Initial kinetic energy, work done by gravity, work done by electrostatic force equal to final kinetic energy. Initial kinetic energy is 0. We have released from rest at A. Then work done by gravity, mgy, work done by electrostatic force, Fe into x. Gravity will act here. Work done by gravity is independent of mass. So what is the displacement? Will be y. So then what is the displacement? Here due to electrostatic force, it will undergo displacement along x-axis equal to x only. यहाँ से यहाँ तक जब आने पर what is the x displacement? Will be x. Horizontal displacement is x. Equal to mvb square by 2. Wait. Rama, wait. So this will be mg. Y का वैल्यू कितना है? Sin L sin 30 degree QE. X का वैल्यू L minus L cos 30 degree. Rama. mg L by 2 QE L
1 minus root 3 by 2 mvb square by 2. Okay, fine. mg 2b cancel हो जाएगा, so qel 2 minus root 3 mvb square. So vb का value mg plus qe gl qel by m 2 minus 3. So this is a speed. Very good question. आपको to bring the Work-Ng theorem. When it moves from A to B, the gravity will do work mgy, the electrostatic force will do work x. Paper is, what is the conclusion of paper? So paper is really very tough. यहाँ पे मैं conclude कर देता हूँ. Paper very difficult. And Ramanuja, don't disturb. Disturb मत करो. Disturb चाहिए होता ना. Very difficult and lengthy. So then complete this paper, no? The percentile will give it for 130 marks. If you get it, no? Sure, short you will be like a 99%. And this is a very toughest paper and lowest percentile, like for 99, the lowest marks. So those students जो भी आप पेपर दे चुके, so आप no need to worry because पेपर टफ रहे तो आपका स्कोर अपने आप बहुत कम हो जाएगा. It's a competition and moderation भी आ जाएगा. So you not to bother, don't bother about marks. यहाँ से परसेंटाइल से हम अपने आप को मेजर करना पड़ता है. तो 130 मार्क्स तो 99 परसेंटाइल आपको इजी आ जाएगा. Okay, fine. Okay, bachcho, like we had a discussion about the 24th, 28th January, the shift one, morning shift. The paper was tough, lengthy, difficult. बहुत स्कोर करना बहुत मुश्किल है. So therefore, for lower marks आपको percentile ज्यादा ही मिलेगा. So don't measure yourself with the marks, measure yourself with the percentile. और moderation भी रहेगा. So no need to bother. तो जो भी एग्जाम दे चुके हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट वाला, रिलैक्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस. नो नीड टू बॉदर. जिसका मार्क्स ज्यादा थोड़ा 80, जस्ट मोर देन 70 और 80 रहे तो देन यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस. जिसका मोर देन 70 यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस. Okay, thanks for great support. Like a evening shift, I'll update in the next video. Thank you all of you. Jai Shriman Narayan. Today we are going to discuss the JEE Mains 28th evening shift paper. The physics was is formula based. Little bit lengthy calculations are there, but it's a formula based. And overall paper, the math was very difficult. Chemistry moderate, and the physics was easy and formula based. And we are going to get the percentile kitna around 155 to 60 will be for the 99 percentile. 155 to 116 marks will be the 99 percentile. So paper discuss करेंगे, so it will be useful. So जो भी like what are the methodology, कितना depth में पूछे, क्या क्या, what is the requirements. तो ये जो like watch करेंगे, तो आप अप्रैल शिफ्ट के लिए, so all these ideas will going to help you a lot. So we'll start the paper. Jai Shriman Narayan. Jai Shriman Narayan kids. So we are going to discuss the JEE Mains 2025. 20th January evening shift. I am your Sridhar sir, physics lecturer. Thank you once again for great support. थोड़ा पेपर फिजिक्स पेपर, पहले फिजिक्स पेपर बारे में पूछता हूँ. इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड एंड लेंदी. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पे. एंड वी शुड कॉल दिस एज लाइक ए पेपर विल कम not easy, around moderate we can call it. And overall 155
So let me put 150 my. For 150 my marks, 99% परसेंट के लिए टोटल पेपर 155 मार्क्स चाहिए. So this is about the फिजिक्स का तो this is the basic structure है. Rather than call दो formulas है, because of calculations it will become moderate. अराउंड हार्ट या 9 क्वेश्चंस वहां पे थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस है, तो इसलिए हम विल कैटेगराइज दिस एज मॉडरेट. आपका टोटल मार्क्स अगर 150 है तो यू आर ऑन सेफर साइड, 99% है. तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे. A particle is moving on a straight line such that velocity time graph has shown distance traveled by the particle. यहाँ पे vt ग्राफ यहाँ पे दिया है, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस. तो ये तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड, कौन सा भी इक्वेशंस लिखने का जरूरत नहीं. So this topic is based on the kinematics, motion in one dimension, VT graph, distance covered should be equal to, this distance covered should be equal to area in VT graph. या तो आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, sum of parallel sides, like height of the trapezium is 20. और अगर if you are not confident, go for triangle. इसका हम ट्राइंगल भी बना देंगे. Half into height 20 into 5, this will be 20 into 10 minus 5, 10 into 5, 50, 5 to 10, 100, 150 meter. This will be your option. So distance covered, area and VT graph. Displacement also area and VT graph. A cube of side, अगला question. A cube of side 10 centimeter having bulk modulus of 1.4 Pascal is placed in atmosphere. Now it is subjected to extra pressure. Then magnitude of change in volume. यहाँ पे हमारा एक cube है, placed in atmosphere. इसका साइड लेंथ कितना है? L. जहाँ like this air will exert force. हर डायरेक्शन से air will exert force. Now it is subjected to extra pressure. So he's asking now the magnitude of change in volume of the cube. So then bulk modulus elasticity chapter. The topic is based on elasticity is equal to dP by dV by V. The magnitude of change in volume of the cube. dV is equal to V into dP by V. Initial volume कितना है? 10 into 10 to power 10 into 10 to power of minus 2 whole cube L cube. Okay, एक काम करेंगे. dP, change in pressure, subjected to extra pressure. 7 into 10 to power of 6. Bulk modulus 1.4 into 10 to power of 11. यहाँ पे this will become 10 into 10 to power of minus 2. इसको तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, into 7 into 10 to power of 6 by 1.4 into 10 to power of 11. 10 to power of minus 3 into 7 into 10 to power of minus 6. 1.4 इसको एक काम करेंगे, 14 into 10 to power of 10 बना दो. 7 ये वाला हो गया 2. The magnitude of change in volume of the cube. Bulk modulus 10 to power of 11.
ये तो +6 है ना, 0.5, 10⁻³ 10⁻⁻7, 5 into 10⁻⁻8. This is cubic meter. Then 1000 liter is equal to 1 cubic meter. Then this will become in liters. Change in volume. इसको further simplify करेंगे. 5 into dV का वैल्यू 5 into 10⁻⁻5 लीटर. बाद में इसको 0.05 मिलीलीटर कन्वर्ट करेंगे. आपको ये तो याद है ना, 1000 liter इक्वल टू 1 cubic मीटर. दैट कन्वर्शन यहाँ पे करना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मिलीलीटर. लेट्स अ बिट, हम सॉलिड को यूजुअली वी डोंट यूज द लीटर ओनली फॉर लिक्विड्स, बट इंटेंशनली सॉलिड को यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यहाँ पे लीटर में एक्सप्रेस करने के लिए द क्वेश्चन इज ट्विस्टेड. little bit difficulty in exam. इतना will get confused. Because जब भी solid का volume है तो will express in cubic meter, and liquid will express in liters. Then the Manfield is the center O of the arrangement. यहाँ पे हमें 3 स्ट्रक्चर है. एक सेमी इनफाइनाइट, ये वाला सेमी इनफाइनाइट. सो द मैग्नीफील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू दिस वायर विल बी 0. इसका नाम दे देंगे 1. स्ट्रक्चर्स का नाम दे देंगे 1, 1, 2, 3. Now first we'll calculate the Manfield at point O will be B1 plus B2 plus B3. B1 will be 0. Why Manfield at point O due to this wire 0? Because the point O lies on the axis of this. Okay, done. बाद में like a Manfield at the 2 at point O due to 2 at the y due to y2. ये तो सेमी इनफाइनाइट हो गया. तो यहाँ पे Manfield will be out of the plane. Out of the plane. So this will become mu naught I by 4 pi a k cap. Then बाद में Manfield due to this will also be out of the plane. This will also out of the plane. So what is the formula for like a arc? For arc it will be mu naught I by 2a theta. What is the theta value? यहाँ पे तो theta value will be 2 pi minus pi by 2. 3 pi by 2. 3 pi by 2 by 2 pi. Angle subtended by the arc. Arc will subtend angle how much? 3 pi by 2 by 2 pi. इसका भी k cap. This will also be outside. टू पाई में पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बिकम हाउ मच? 3 pi by 2. Then mu naught I 4 pi a k cap. इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 3 mu naught I by 8a. 8 pi a यहाँ पे रख देंगे. देन इसका mu naught I, अगर 8 pi a I take outside, this will become 2 plus 3 pi.
Option we have to adjust it. There's a net field at the point 2. This is based on the magnetic effects of current. And the subtopic name is Biot-Savart law. Now we take the next question. A planet of mass 8 ME. A planet of mass 8 ME and radius to our escape velocity kV. Find the value of K. This is the based on the gravitation. Escape velocity formula. On the planet, mass of planet is 2 RE and 8 ME. Earth mass, radius of Earth is M, mass ME. यहाँ पे escape velocity VE है. What is the escape velocity at this particular point? Escape velocity का formula कितना है? V equal to G 2 GME by RE. Escape velocity on the another planet 2G, mass कितना हुआ 8 ME, इसका radius कितना है 2 RE. एक 2 तो अंदर रहना चाहिए. So this will be 2 get cancels. 4 into 2. 2 times of escape velocity. Simplification. This is the Earth. ये दूसरा वाला planet. ये तो फॉर्मूला अगर याद रहे तो वेरी इजी है. बिना अदरवाइज आपको डिराइव करना पड़ता है एग्जाम में. The topic is based on the gravitation and escape velocity concept. We'll take the next question. It's a problem based on the units and dimensions. The topic name is units and dimensions. Then first, angular impulse. Angular impulse. What is angular impulse? Force into time. Angular impulse, like torque into time. That one. Angular impulse J theta. इसका like a torque acting for small duration of time. Torque का तो Newton meter. ये तो time है. Force into distance into time. So this will be Newton. Force will be in Newton. Newton will be M L1 T minus 2. Distance का L and इसका T. So M L square T minus 1. M L square T1. This is the angular impulse. M L square T minus 1. बाद में रेजिस्टिविटी ले लेंगे. रेजिस्टिविटी मीन्स डायरेक्टली आप एक काम करिए. R इक्वल टू रो L बाय A. इसके लिए फॉर्मूला पहले एक काम करेंगे. वोल्टेज का ले लेंगे. विल सर्च फॉर वोल्टेज. Voltage will be work done equal to charge into potential. Potential difference will have unit voltage. Work done means force into displacement. जो टॉर्क है वही यहाँ पे लगा देंगे. वर्क डन का m l स्क्वायर t माइनस 2. चार्ज तो एम्पियर इंटू t. तो वोल्टेज का डायमेंशन हुआ m l स्क्वायर t माइनस 3 e. तो ये वाला तो वोल्टेज का हुआ. अगर जब वोल्टेज पता है then we can go for current density equal to electric field by rho. This will be very useful.
करंट डेंसिटी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आई इक्वल टू ए बाई 1 by rho. Electric field will be defined as potential by length, current by area, this voltage by length. एक काम करेंगे x square, current by area will be current density, electric field will be voltage per unit length. No, हमें तो already we know this one. This will be current का तो a है, L square 1 by rho. वोल्टेज का अभी फाइंड आउट कर चुके, t minus 3 a by l. So the value of rho will be m l cube t minus 3. Voltage is a minus 1, no? A minus 1. So this will become a minus 2. So resistivity is m l cube t a minus 2. What is the latent heat? Latent heat जो बचा है, or this one. So what is the latent heat? Latent heat will be q equal to mlf. q तो एनर्जी है, और एनर्जी का तो वर्क डन, लेटेंट हीट का तो एल स्क्वायर टी माइनस 2. ऑप्शन 4 विल मैच. अगर याद रहे तो ओके, और एल्स यू हैव टू एनालाइज इन दिस पर्टिकुलर मेथड. यूनिट्स एंड डायमेंशंस लाइक ये सब याद तो नहीं रख सकते, सो एटलीस्ट लर्न द मेथोलॉजी. Distance between the let me save this one. Distance between object and image for a concave mirror is 20 and magnification. Find the focal length of concave mirror. There's a problem based on ray optics and concave mirrors, spherical mirrors. The concept is more involved is spherical mirror. यहाँ पे हम mirror rough diagram. इसका focal length we have to find out. इसका focal length हमें find out करना है. Okay, then distance between object and image for a concave mirror is 20 centimeter and magnification m equal to minus magnification. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देंगे m equal to -3. सो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, दिस द फोकल लेंथ. अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, then this will be the image, because m equal to -3 the information is given for concave mirror. For real object, the real object should be magnified and inverted. And उसका height कितना है? So अगर इसका h height of the object is ho, it will be hi. axo इसको लेंगे, और डायरेक्टली इसका u will use symbols typical और रे ऑप्टिक्स का सिंबल. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर. Distance between object and image for a concave mirror. So therefore now 30 plus u is equal to v. Then magnification minus v by u. Magnification का फॉर्मूला कितना है? -3. v equal to 3u. Then यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 plus u equal to 3u.
30 इक्वल टू 2u, u इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर. Okay, now हमें u पता है, so then we will find out the v. v will be 3 into 15, 45. So अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू मिरर फॉर्मूला. v का वैल्यू -45, u का वैल्यू -15, बाद में फोकल लेंथ 15 कॉमन ले लेंगे, will be 1 by 3 plus 1 equal to -15 by 5. 3 1 जा 4 by 3. 15 3 जा -45 by 4. Let me check the calculation. Okay, fine. यहाँ पे 20 इसको 30 लिया था, 20 नो. ये वाला ठीक है. यहाँ पे 20 u will be 10. अगर u10 हो गया तो v will be 30. 10 यहाँ पे बाहर ले लेंगे. Then 4 by 3, this will be 10. 30 by 4, okay, 7.5 centimeter. This will be your answer. A simple magnification m equal to -3. With that, a thoda diagram and this imagination should be there. Next question. मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. अगर ए बी आपको याद रखना पड़ेगा. मिरर फॉर्मूला, देन मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज m equal to -v by u. For lens it will be m equal to v by u. Magnification same, this like a lens equation will become 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f for lens. I think that like this you have to remember. अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. In a circuit shown provided the potentials at NB are equal, find the current time. यहाँ पे जो current NB are at same potential, so conditions क्या दे रहे हैं यहाँ पे, NB are at same potential. Then is asking current. So now there's no current through this, so circuit तो now will become simple series parallel. R40, ये 20, ये वाला 10, बाद में एक करंट पूछ रहा है, फाइंड द करंट. यहाँ पे तो रेशियो 10 by 20 should be equal to R by 40. Then only potentials at A and B will be same. So the topic is based on current density and Wheatstone network. Wheatstone network very important for JEE mains advanced, but we never use in any electronic circuit. ये तो आपको पता होगा. कहाँ पे यूज करते हैं Wheatstone network? None of the जो भी मोबाइल हमारे पास, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक परसेंट जितना भी है, वी आर नॉट यूजिंग Wheatstone network. देन सर क्यों पढ़ रहे? हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है. The Wheatstone network is designed to measure the fertility of soil. Wheatstone network is used to fertility of soil. Oh, equipment में this Wheatstone is a part of that one, and it will be very sensitive. The Wheatstone will be very sensitive when the ratio of all these arms, when all these resistances are equal. These are the conditions. 40 volt. Then यहाँ पे resistance का values 10 by 20 equal to R by 40.
R इक्वल टू 20 ओम। अगर R यहाँ पे 20 ओम है, इसका इफेक्टिव कितना 30 ओम, ये तो हुआ 60 ओम। इसका लगे 20 प्लस 40 विल बी 60, 10 प्लस 20 विल बी 30। देन इसका करंट फाइंड आउट करेंगे, I1 एंड I2। I1 का वैल्यू 40/30, I2 का वैल्यू 40/60, 4/3 प्लस 2/3 एम्पियर। ये तो करंट, सो टोटल करंट पूछ रहे हैं। अप्लाई KCL एट दिस पॉइंट। So total current I equal to I1 plus I2, 4/3 plus 2/3, 6/3, 2 ampere. Same Wishton network, little bit asked like a जो भी फॉर्मूला विस्टोन नेटवर्क का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। बाद में थोड़ा सीरीज पैरेलल का कंडीशन यहाँ पे पूछे। यहाँ पे करंट I1 एंड I2, सर I1 एंड I2 कैसे ले रहे हैं? तो दिस डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस 14 ओम। इसका ड्रॉप कितना होगा 40 वोल्ट। तो करंट कितना होगा इस 60 ओम रेजिस्टेंस में 40/60। यहाँ पे ड्रॉप कितना है 40 वोल्ट। देन रेजिस्टेंस कितना 30। अप्लाइंग ओम्स लॉ विल गेट I1 I2। यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। Then a balloon system having mass m is moving up with an acceleration. Find the mass to be removed for it to have acceleration 3। कितने acceleration balloon system total, ये तो balloon है, तो there's a complete mass of the system is m। balloon का mass और a block है। then total mass is m। कितना we should neglect the volume of mass removed। यहाँ पे the condition is also very important। now यहाँ पे हम m dash रखेंगे, total m minus m naught। m naught is the mass removed। यहाँ पे थोड़ा मास निकाल चुके हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ 3। अर्लियर यहाँ पे बाय एंड फोर्स, अर्लियर बाय एंड फोर्स एक्ट हो रहा है, सो इसका मास mg। नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द मास रिमूव्ड। सो हम जब मास रिमूव करते हैं उसका वॉल्यूम मीन्स टोटल जो भी बाय एंड फोर्स है इट विल रिमेनिंग सेम। there's a meaning of this, neglect the volume of mass removed, not the neglect the mass removed। neglect the amount of mass, volume of the mass means जो भी बाइंड फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो रिमेन सेम। दिस इज मीनिंग इसका सेंटेंस का। देन व्हाट इज द मास m minus m naught g। पहले डायग्राम से एक इक्वेशन लिख देंगे, fb minus mg इक्वल टू m। इस डायग्राम में fb minus m naught g m minus m naught इंटू fb का वैल्यू कितना है mg प्लस me माइनस mg प्लस m naught g 3ma माइनस 3m naught है। तो ये mg तो कैंसिल हो चुका है। हमें तो m naught वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो 3m naught plus m naught g equal to 2ma। so m naught is equal to 2ma by 3a plus g।
ये तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेकिन आप तो कर चुके होंगे प्रैक्टिस इससे पहले, एग्जाम से पहले भी, अगर टीचर नोट्स या कौन सा भी एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी सिंपल अप्रोच है। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से थोड़ा एग्जाम में अगर आपको समझ पाए तो वेरी इजी है। So this topic is based on the question is based on the laws of motion, simple laws of motion, F equal to ma concept. Okay, दूसरा वाला next question. Which of the following phenomena is not explained by the wave theory of light? यहाँ पे let me clean my nose. Which of the following phenomena is not explained by the wave theory of light? Reflection of light is refraction, diffraction. Compton effect. Compton effect is based on the particle nature of light. जब photon is incident, this is electron. After this, the photon will move with certain kinetic energy, and the electron orbital will move in this direction, p dash. What is the basic idea? The total photon will not be absorbed. This problem is there in SEORM also. Compton effect, I think it's a part of a syllabus. जब हम होटल इफेक्ट पढ़ रहे तो दिस वन बेसिक नेसेसिटी कंडीशन विल बी डिस्कसिंग। इसके लिए तो वी नॉट टू क्लेम एनीथिंग आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज इन फोटल इफेक्ट दिस कंडीशन हमको एक्सप्लेन करना है। सो like this condition is called as a Compton effect. Then momentum and energy is conserved. Now, this is a basic idea of the photon. So this is called as a scattered photon. What actually happens, like when a photon is incident on electron, the electron cannot absorb the photon completely, and a part of photon will be scattered. This thing we cannot explain with the help of wave nature. So for this, what we are assuming, there's a photon particle nature. So wave nature cannot explain this photon Compton effect. The scattering of photons concept is called as a Compton effect. And equilateral triangle frame of side length is connected by the magnitude as centroid. अगर आपको प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अगर फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्टली यू शुड गो फॉर द फॉर्मूला। ओके फाइन। यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। या फाइन। medians, equilateral triangle, medians. Current I is flowing. हमें यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। सो दिस एंगल्स आर नीडेड, कौन सा भी ले लो। सो नो विल टेक द दिस एज alpha and beta. This perpendicular distance is needed, and this will be alpha, beta. यहाँ पे सेंट्रोइड में वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। साइड लेंथ एल, इसका साइड लेंथ कितना है? एल है। सो फर्स्ट एल इसका हाइट कैलकुलेट करेंगे। रफ डायग्राम, लेट मी ड्रॉ इट। दिस विल बी एल बाई टू, एल ए वाला तो दिस विल बी 60, सो विल कैलकुलेट एच। सो साइन 60 degree equal to h by l, h equal to l root 3 by 2. Then a, this will be d dash,
D plus D dash will be H, and the ratio D dash by D will be 2:1. हमें तो D चाहिए, so D dash will be 2D H by 3. तो H का वैल्यू कितना, L √3/2. So L by 2 √3. This is the value of D. तो यहाँ पे magnetic field at the center will be 3 times of mu naught I 4 pi D sin alpha sin beta. फोर पाई डी, डी का वैल्यू कितना है, L by 2 √3 अल्फा बीटा. यहाँ पे हम अल्फा अल्फा दिस विल बी 60, अल्फा इन बीटा विल बी 30 degrees. कैलकुलेशन, सो बीटा एंड अल्फा दिस विल बी 90 degrees. ये तो ट्राइंगल हुआ, this will be total 60, so this is the bisector median by 30. This alpha beta will be 60 degrees. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin 60 √3/2 √3/2. Total will be mu naught I 2 pi L √3. √3/2 into √3/2 will be √3. This will become 9 mu naught I by 2 pi L. This will be your answer. ये तो better remember. बहुत सारे ऐसे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लाइक उसका वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट नहीं तो याद है तो फाइंड वेरी गुड, नो, लाइक मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the ring due to arc, due to semi-infinite wire, due to long wire, due to square frame, at the center of the square frame, at the center of the triangular frame. Better to remember and go, no, in exam you can directly pick up this option. यहाँ पे जो टाइम बचता है वो दूसरे टफ क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं. It is a methodology for JEE Mains. The topic is based on Biot-Savart law. Sir, आप array को like telling that memorization is, that's what the JEE Mains is all about. Like जितना याद है तुम्हें, जो भी पढ़ते हो, कितना तुम याद रख के एग्जाम में जा रहे हो, और how you are going to use it. Find the energy density of capacitor if potential drop is 20 volt, capacitor distance between the plates. यहाँ पे हमें एक capacitor है, energy density पूछ रहे हैं. Okay, so this is the distance D, area of cross section, potential drop 20 volt, and the given capacitor. What is the energy density formula? Half epsilon naught E square. हमें यहाँ पे E चाहिए. What is E equal to? Potential difference. They call this is V naught. V naught by D. V naught square D square. Capacitance का energy ने find the energy density of the capacitor पूछे, not energy. तो यहाँ पे capacitance का no use. Like you can write like this. बाद में energy calculate करने के लिए हमें capacitance जरूरत है. Now substitute the value, half into 8.854 into 10 to power of -12. In exam ये value आपको मिलेगा वहाँ पे. ये वैल्यू वहां पे रहेगा. यू नीड नॉट टू गेट स्केर्ड. कॉन्स्टेंट्स कौन सा भी, जो भी कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू आप याद करने का जरूरत नहीं है. एग्जाम में दैट डेटा विल बी अवेलेबल. वी नॉट स्क्वायर 20 स्क्वायर, डी स्क्वायर 1 into 10 to power of -6 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1770 विल कम. दिस विल बी योर ऑप्शन.
the concept based on capacitors. The transitional kinetic energy of molecules of 50 gram of carbon dioxide gas at 17 degrees Celsius. Then इसके लिए तो हमें KTG, we have to go to the kinetic theory of gases. The topic is based on the kinetic theory of gases. The translational average translational kinetic energy. Average translational kinetic energy equal to 3 by 2 KT. K value, Boltzmann constant value. Then you have to substitute the temperature. Okay, this is the average translational kinetic energy per molecule. This is per molecule. We'll calculate 50 gram. In the 50 gram, number of moles will calculate first. Number of moles will be, number of moles is equal to 50 gram by molecular mass. 50 gram by molecular mass of the carbon dioxide will be 44 gram per mole. Then after getting number of moles, we'll calculate number of molecules on number of CO2, number of atoms will calculate. Number of atoms will be Avogadro number. यहाँ पे थोड़ा Avogadro number इस तरह ले रहा हूँ into 3 into 3. So this will be the number of atoms. 3 is 18. No, number of atoms. Number of moles. हमें तो number of atoms चाहिए था ना. Okay, पहले 50 ग्राम में mass will be number of moles equal to mass by molecular mass. Mass आने पर number of mass equal to number of moles into number of molecules into Avogadro number. Number of molecules. From number of molecules, this number of moles we got it. From number of moles, okay, okay, we have to calculate the number of atoms. No, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, एक कार्बन है. We have to calculate total per molecule. Number of molecules means it will be this much. Yeah. We'll use this method. हमें number of atoms चाहिए. इसके लिए तो 50 by 44 ये तो molecule हुआ. So इसको हम 3 atoms है, 3 by molecular mass 44 and into Avogadro number 6.022 into 10 to the power of 23. ये हमें total मिलेगा number. Then average translational kinetic energy of molecules. Total kinetic energy will be N into K average. यहाँ पे Boltzmann constant ये भी substitute करना है. Lengthy calculations are there. Enjoy. We'll get answer. There's no issue with this one. There's a method. Number of moles. Calculating number of atoms. Number of moles into then Avogadro number. We'll get number of atoms. Why 3? Because there are 3 atoms are there. Masses are attached to uniform meter scale. Find M for equilibrium. So the question is like this. The masses are 400 gram. There's a meter scale. यहाँ पे meter scale है.
Then 400 gram is attached at a distance 10 meter from one end, and m gram is attached at distance of 10 meter from other. So mass of the scale is 250 gram. It is hinged about at a distance 10 meter from the center. There's a hinge. There's a diagram. Okay, now we have to calculate this unknown mass. And the net torque about the hinge should be 0. So the net torque about O should be 0. For this it will be 400 into G into 30. This will be anti-clockwise plus M naught G into 10 will be clockwise. Mg into 40 will be clockwise. 400 into 30 is equal to, or say this will be minus 10 m naught plus 40 m minus 40 m equal to 0. Torque we are taking about 0.2 r cross f. This will be anti-clockwise. About 0.2, this weight mg and this r bar, this will be clockwise. Here r bar and f, this will be clockwise. Okay, fine. Bar may no. This will solve it. This will be 1200 equal to m naught will be 10 into 250 plus 40 m. 1200, 2500 plus 40 m. This will be 50. 40 plus 10 net torque. This will be 50. Diagram. 12,000 it is. Okay. 12,000 में 2,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,500 हो जाएगा ये 50 m. 0 वो भी कैंसिल हो गया 950 by 5 45 19 19 190 gram sorry. So diagram, there's a diagram. This is about the torque. So the concept is based on the basic rotation mechanism, and the concept of torque we are using it. Diagram thoda मैं guess किया था, it got missed. I just made a guess. We'll take the next question. A metallic disc of radius r is rotating about axis of with uniform angular speed omega, uniform and will be find the potential difference between the center and the edge. So these are completely based on there's a metallic disc. It is rotating about what? About an axis passing through its center. Then we have to calculate the potential difference between its center and the edge. यहाँ पे हम एक काम करेंगे. So there's everything we can assume just like a one rod. एक rod assume करेंगे. So what is the length of the rod? R. Then what is the EMF induced at a distance x? It will have velocity v dx. So what is the EMF induced? dE equal to bv dx. B, what is v? X omega dx. So b omega x dx. The limit will be 0 to r. B omega r square by 2. This is the EMF induced between the across the rod. But sir, यहाँ पे तो डिस्क पूछा है, आप तो रॉड ले रहे हो. Can we assume this disc made up of such rods? जब आप
लेकिन इस तरह ज्वाइन करोगे तो व्हाट डू वी गेट? We get the disk only. So can we assume that the disk is made up of such rods? Then each rod will behave like a cell. So B bar we are assuming into the plane. B bar velocity. So this end will be or B bar out of the plane assume करेंगे. So B bar out of the velocity. So this end will be positive, negative. So यहाँ पे हम हर एक रॉड को हम एक सेल इक्वलेंट सेल एज्यूम करेंगे. Then all these cells are parallel between the point O and A. They're parallel. So then equivalent circuit इस तरह हो जाएगा. This one. Array का rod EMF will be same E, and this is the point A. This is the point O. So what is the effective EMF? Effective EMF will be E only. So therefore, for rotating this, we should just assume that it is made up of one rod. There's a concept. ओके फाइन. सो लाइक यहाँ पे हम एक रॉड एज्यूम करते हैं, पहले इसका ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे. इसी तरह डिस्क को हम लाइक ऐसे बहुत सारे रॉड से बन रहा है बोलकर एज्यूम करते हैं. देन ईच रॉड विल बी लाइक ए सेल and all these cells will be in parallel. So effective EMF will be E only. So EMF induced across the rod is nothing but EMF induced across the center in the edge or the ring. And this is based on the electromagnetic induction topic. Now we'll take the next question. We have completed 15. This based on the topic based on the semiconductor physics. I think this is a very popular question. Like during positive off cycle, the diode will be forward biased. इसका positive and negative off cycle होगा. Then when this end is positive, this is negative. The diode will be forward biased. Diode forward में तो there will be flow of current. Current कैसे flow होगा? So plus minus. Okay, agreed. Then during half cycle, so we'll assume like this. There's an input. There's an input. Current will flow like this. Sorry, current will flow like this here. So negative off cycle will come. So first, actually, consider V naught sin omega t. Sorry, like V naught sin omega t. हमारा input signal इस तरह है. तो पहले current like this will be positive, negative. Current will flow clockwise, so the diode will be off. During positive off cycle, यहाँ पे input plot करेंगे. During positive off cycle, no current. During negative off cycle, there will be current. एक simple diagram draw कर देता हूँ. ज़्यादा मेरे को बकबक करने की जरूरत नहीं होगा. The diode will be off because this is P and N. This N during positive off cycle. So no current will flow.
ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव ऑफ साइकिल दिस वन. No, like you do one thing. Positive, positive. This will be negative of cycle. This will be negative of cycle. Then there'll be a flow of current. Current is तरह flow होता है. Again, this will get repeated. So यहाँ पे हमें current during only negative of cycle current flow होता है. This will be our output VAB. So we'll pick up the option 2. Based on the rectifiers, semiconductor physics rectifiers. Question number 17. Work done to rotate the dipole. So there's an electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. प्लेस पैरेलली यहाँ पे डाइपोल है. We have to work done to rotate the dipole by how much? By 60 डिग्री. इसी डाइपोल को हम ऐसे रोटेट करेंगे. By how much of angle? 60 डिग्री रोटेट कर रहे. By 180, sorry, 180. 180 means the dipole will take this position. A वाला initial, this will be final. Initial energy, dipole moment इस तरह है. यहाँ पे dipole moment इस तरह है. इनिशियल एनर्जी कितना? P बार PE cos 0 डिग्री. फाइनल एनर्जी कितना है? माइनस PE cos 180. ये हुआ PE. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू UF माइनस UI. UF का वैल्यू कितना है? P. Initial will be minus P. So total will become 2PE. Dipole moment is given by 6 into 10 to the power of minus 6. Electric field is 10 to the power of 6. So you have to do 12 joules of work. A little bit some simple maximum theoretical questions like will be there. But यहाँ पे थोड़ा values देके पूछ रहे हैं. Work done to rotate the dipole. What is the formula? Dipole moment U equal to minus P bar dot E bar. The energy of the dipole, how much it is? U equal to minus P bar dot E bar. Torque on the dipole will be P bar cross E bar. Electrostatics dipole concept. We take the next question. I have to go to some other place. In the figure shown, object kept at a distance 13 centimeters from the interface forms a real image which is double the radius of curvature of the interface. This is based on the refraction at spherical surface. This axis, this is the boundary. यहाँ पे mu 1.3, 1.4. यहाँ पे object 13 centimeter. Forms a real image which is double in size. इसका magnification कितना है? 2 times of it. The radius of curvature of the interface. यहाँ पे R value पूछ रहे हैं. This is the interface. This is the interface. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका म्यू वैल्यू 1.3, इसका म्यू वैल्यू 1.4. It forms real image. Real image means we can take like this. Then it forms a real image. Double the size.
this is U, this is V, and is asking together. First, for this, we should know the magnification formula at the refraction spherical surface. Very, very important. What is the formula for magnification? Magnification for refraction spherical surface will be mu1, mu1, mu2 by V by U. mu1 का वैल्यू कितना है 1.3, mu2 का वैल्यू 1.4, V हमें पता नहीं है, U will be how much -13, यहाँ पे 13 by 14 into V by 13 minus V by 14 magnification, which is double the size. What is the magnification formula? H by magnification is HI by HO. Double the size. Inverted will be. So this will be minus 2HO by HO. M equal to -2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. M equal to minus V by 14 and M equal to -2. So therefore, -2 is equal to minus V by 14. V equal to 28 centimeter. Then we'll use the refraction spherical surface. There's a refracted ray, there's incident ray. Now we'll come to the concept. A वाला तो incident ray है. Then the formula will be mu2, refractive index of the medium in which refracted ray is present, mu2 V minus mu1 U will be, these are mu2 value is how much 1.4, V is plus 28, mu1 is 1.3, U will be minus 13, mu2 1.4 minus 1.3, R is what we should calculate. Yeah, 2 by 3 centimeters, we'll get it. Solve करने पर हमें R equal to 2 by 3 centimeter. Very good problem. यहाँ से there's a one formula. यहाँ पे A B formula याद रखना पड़ेगा and then this particular formula. Very important है. जितना भी पढ़ते हो formulas को भी याद रहना जरूरी है. Otherwise without formula we can't do. If initial momentum P naught, initial position X naught, amplitude known, the momentum position at any instant can be found. Amplitude initial phase can be represented in terms of P naught X naught. If initial momentum P naught, initial position X naught, amplitude and angular frequency are known, then momentum position at any time instant can be found out. I think this is possible, no? Correct statement. Amplitude and initial phase can be represented in terms of P naught X naught. Y equal to A sine omega t plus phi. No, not possible, no. Amplitude and the initial phase can be represented in terms of momentum and x naught. Initial velocity, तो इसको differentiate करेंगे. A omega at t equals 0, what will be the velocity? There will be the V naught. A omega put t equals 0 cos phi. इसका multiply करेंगे m V naught A omega cos phi. So P naught equal to A omega cos phi.
Amplitude and initial phase can be represented in terms of P naught and X naught. X naught is not there. There's no X naught. A cos phi आप इस तरह लिख सकते हैं. In terms of X naught, not possible. So there's a rule out. Simple theoretical one. Assertion is correct. Reason is wrong. Take the next question. A little bit tired. सुबह कॉलेज वहाँ पे काम करके फिर यहाँ पे शाम में पेपर डिस्कस करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है. So let me finish off this one. I'm not an online teacher. Just only for to help students, I'm taking this particular task. I'm full-fledged online. I'm working in Narayana IIT Academy, Hyderabad. Next question. Rod AB moves uniformly and hence EMF induced. The EMF is proportional to. Then okay, we'll एक diagram draw कर लेंगे. This is a rod. इसका velocity v है. EMF is proportional to. Just only EMF के बारे में पूछ रहे हैं. So everywhere magnetic field is out of the plane. This will take it y. Let it be x. Then what is the EMF induced will be equal to 2 okay v into x. Length of the rod. Length of the rod is how much x is there at a given instant. What is v? V is dy by dt and is moving with a constant velocity. So y ka v to y by t we can represent. So y equal to v equal to y by t. We should replace also x. This will be constant. Tan theta or theta will make it 45 degrees. Then this will become x by y. X also equal to y. Then b y t x is also in terms of y. So this will become b y square t. Then what is y equal to? This one. एक काम करेंगे. Then moving with a constant velocity, no? V will be constant. X what happened? I can write it as y. Y I'll write it as vt. So the EMF is proportional to t. V will be constant. E as a function of t. So what is BV? 2BVX. यहाँ पे 2x रहेगा. Okay, fine, no problem. The EMF induced will just depends only on this length of the rod. What is the length of the rod? 2x. So motion EMF formula equal to BVL. Length of the rod is 2x. A problem based on motion EMF electromagnetic induction. This question based on the electromagnetic wave propagation. I have the magnetic field. In electro, the magnetic field is given by 30 omega sine omega t minus kz. The corresponding electric field is asking. Then we know BC B naught C is equal to E naught. पहले E naught का value calculate करेंगे. And how to remember? Before Christ equal to E, before Christ B naught C. B naught का value कितना है? 30 into C will be 3 into 10 to the power of 8.
E naught का value will be E naught will be 9 into 10 to the power of 9. And what about the wave? Wave is propagating along positive z axis. The wave is propagating along positive z axis. E, okay, this is for our convenient. हम यहाँ पे थोड़ा equation draw कर रहे हैं. So we know the value of E naught. The wave is propagating along positive z axis. So इसका यहाँ पे तो E may be sin omega t minus kz चाहिए. And what about one more condition? The E will be E and B will be in phase. So therefore, these two are ruled out. Now, among them, only these two. And what is one more condition? E bar should be perpendicular to B bar vector. When a EM wave propagates, B naught C equal T naught, like this, will get the amplitude. Then E bar and B bar will be in phase. So B bar was sine, so sine. So these two are ruled out. Okay, agreed. Then बाद में, what is the condition? E bar should be perpendicular to B bar. तो यहाँ dot product ले लो, it should be equal to 0. Then यहाँ पे amplitude का ले लेंगे. So this one, I dot I root 3 2 into 1 by 2 plus root 3 by 2 into 1 by 2. B bar dot this one, it is not satisfying this. Then if you take this option, 1 by 2 I cap plus root 3 by 2 I cap. I'll explain clearly. We have to satisfy like this, root 3 by 2 I cap plus j cap by 2 dot I cap by 2 minus root 3 by 2 j cap. If this equals 0, then that particular thing will represent. Because why it should be 0? Because this E bar and B bar should be perpendicular. So we'll take the dot product. So this will become root 3 by 4 minus root 3 by 4. A to was 0. Okay, then this condition is satisfied. E bar dot B bar should be 0. Therefore, this will represent your wave. Any other thing, if you apply, will be lengthy. This is the simplest approach. For an EM wave propagating, E bar and B bar will be in phase. यहाँ पे, like you should directed I cap plus J cap. The E bar will be directed somewhere in XY plane. Then how B bar should be, means roughly, if E bar is somewhere like this. B bar will be in this direction. And the wave will be propagating along the axis. This you remove, you'll get confused. Okay, fine. So we'll problem based on EM waves. I'll indicate करता हूँ. Propagation of EM wave. Next question based on the magnetism. I think there's in this section there's only the only question came up, magnetic materials. A bar magnet is having length 12. इसका length कितना L. There's a bar magnet. When we measure magnetic field at particular percent, if error in the measurement of length is 1%,
मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरर है? दिस विल बी वाई, विल टेक इट। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इफ द डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। We have to calculate the error in the measurement. थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे like I didn't gathered it properly. Let me read question. A bar magnet is given having length L 12. Find percentage when we measure magnetic. Find the percentage error in the measurement of the magnetic field. Find the percentage error in B bar when we measure magnetic field at perpendicular bisector. If error in the measurement of length and magnetic moment is 1%. Or the magnetic field at distance will be mu naught m by 4 pi y cube. Then error in the measurement of this one, dB by B is equal to dm by m plus or minus 3 dy by y. Error in the measurement of magnetic moment, 1%. Error in the measurement of length is 1%. Total will be 4%. And just based on the errors also. We'll take the next one. A thin film of refractive of liquid. Okay, this is the let me read the question. A thin film of liquid is formed on a ring of radius. यहाँ पे मैं soap film दिखा रहा हूँ. A light of wavelength is incident. A वाला light है. Then thin film. ये जो there's a film. Light of wavelength and the sensor is placed on other side. यहाँ पे sensor है. Little bit very tough question. Huh? Sensor. Due to evaporation of liquid, the sensor detects minima at an interval of 12 seconds. Means some transmission of light also will take place. This will be transmitted light. There's a incident light. So what do we get here? Like the light will get transmitted, no? The light will get transmitted, and there's a sensor for every interval of 12 seconds. It will detect the minima. Then what is the condition for for transmitted light? 2 mu should be equal to n lambda. Then 2 mu delta L equal to n lambda delta n lambda. Continuously be radiating by delta T equal to delta n by delta T into lambda. Delta L by delta T will calculate. This will be delta n by, that will become 1. Okay, I'll write it. Lambda by 2 mu. This will be 1. Lambda is how much? 560 into 10 to the power of minus 9 by 2 into mu will be how much? 1.1. Then what we have is for every 12 seconds. Huh? So where we have to write it, that will be 12 will be here. This will be delta L by delta T. Then what is the volume? Volume of the liquid will be pi r square into thickness L. Rate of evaporation will be pi r square delta L by delta T. This delta L by delta T will calculate the value from here.
थोड़ा डायग्राम को मैं ऊपर ले लेता हूँ. Try to understand. This is the some good some idea should flash for you. Okay, sir. Like आप ये जो लिख रहे, what is this? This particular liquid will have the volume. इसका रेडियस कितना है? रेडियस will be r. तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर प्लस थिकनेस. The rate of evaporation. The rate of evaporation means the rate at which volume of this decreases. The thickness will decrease. As thickness decreases, then minima will occur for certain values for every 12 seconds. So we can calculate from there. So this will become इसका calculation 24 56 into 10 to the power of -8 24 into 15. This will be 10 to the power of -7. 4. Okay, this value will substitute here. Delta V by delta T evaporation. Pi value. R value 20 centimeters, 0.2 whole square. And this total value will be 1.5. This is the rate of evaporation. Very good problem. Based on the radiation and not photoelectric effect. It's based on the wave optics. Radiation and wave optics. Particle of mass 4 kg. Initially a test start from due to force. Find the ratio of inch per at equal to 4 seconds and average power 0 to 2. Start from rest due to force. Find the ratio of inch per at equal to 4 seconds. And so we'll do one thing. Due to force acts on a particle, acceleration will calculate A equal to F by M 2I cap plus 3J cap by 4. This is the acceleration. Then velocity will be V equal to start from rest U plus 80 0. Acceleration will be 2I cap by 2. T equal to 4 seconds. 2I cap plus 3J cap. Then instantaneous power. What is the instantaneous power? F bar dot V bar 2I cap plus 3J cap 2I cap plus 3J cap. I dot I1. So 4 plus 9, 13. 13 watt. Instant power should be scalar, huh? It's not be vector. Then बाद में average power पूछ रहा है. 0 to 4 and average power 0 to 4 seconds. So what is the speed? Speed will be, speed of this will become equal to, what is the speed of this will be? V equal to U plus 80. What is the acceleration? Magnitude of acceleration will be, acceleration का magnitude find out करेंगे. ये वाला तो 4 root 13 by 4 9 root 13 by 4. So root 13 by 4 into t. So then average power इस तरह हम define करेंगे.
change in contingency, F bar dot B bar. एवरेज पावर सिंप्लीफाई करेंगे. एवरेज पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम. वर्क डन विल बी चेंज इन contingency in कितना 4 seconds. Initially particle was at rest. Then contingency will be m v square by 2 by 4. m का वैल्यू कितना 4 by 2 into 4. v square का वैल्यू रूट 13 by 4 whole t whole square. वन बाई टू 13 16 टी स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू 4 स्क्वायर 13 by 2. So the ratio is asking instantaneous to average. 13 by 2 will be 2. Okay kids, like I'm getting later, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉलेज का वर्क है. I have to go. This is about the, I think 24 questions, around 23 questions is what I discussed. अभी 2 questions मेरे पास है मगर I don't have time. Fine. The paper was very lengthy, not tough. नहीं, यहाँ पे tough नहीं. Paper was lengthy. तो भी formula based है, lengthy है. यहाँ पे अगर आपको around 60 या 65 या 68 marks मिलेगा तो then it will be 99 percentile. Okay, agreed? Okay, बच्चों, like we had a discussion about the 28th evening shift, 28 January 2025 mains evening shift का paper, second shift का. The paper was lengthy, formula based and lengthy. 2-3 क्वेश्चन है which was very difficult था पूछे. तो बाकी सभी 20 क्वेश्चंस तो they are very normal formula based. So that's why we just call it a moderate and lengthy paper. And आपको ये around percentile कितना 99% के लिए around 160 is needed, between 160 170. So this is the thing. So all the best for coming shifts. तो the overall methodology अब तक तो बहुत सारे पेपर हो चुके हैं. आप पेपर देख के बाद एटलीस्ट हैव ए कंक्लूजन दैट जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. द ओनली वन रेमेडी, यू हैव टू रीड. जो भी सिलेबस है 80% 70%, आपका टारगेट मार्क्स कितना है, उससे ज्यादा थोड़ा टारगेट मार्क्स आपका 50% है, 70% सिलेबस ले लो और पढ़ लो. जो भी तेरी है पहले सब टेरिकल फॉर्मुलास पढ़ लो. बाद में देन रिवीजन ऑफ फॉर्मुला, देन गो फॉर PYQ. आई थिंक दिस अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर JEE. बिना रिवीजन करे, so there's no need of any strategies. So I am giving one advice, like even April session के लिए this will be good advice. Like जो तुम पढ़ते हो चैप्टर विथ बुक, अवॉइड स्क्रीन टाइम. एक बुक ले लो, आपका टीचर नोट्स है, नोट से पढ़ लो, जितना होता है उतना पढ़ लो, याद रख लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो. योर लाइफ कैरियर विल चेंज. एंड अवॉइड स्क्रीन टाइम. नो नीड टू, नो शॉर्टकट ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज. यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है एकदम. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तुम कुछ भी बनोगे नहीं. ओके, फाइन, गुड. All the best, all the best. Thank you very much. Thanks for great support.